अंजना is the host for today. अंजना को सभी जानते हैं, कोई तारुफ की जरूरत नहीं है. हमारी चेयर योगा स्पेशलिस्ट, सीनियर्स के साथ काम में एक्सपर्ट हैं. सब बहुत पसंद करते हैं और कहती हैं हम मुझे सीनियर समझो. कौन समझे सीनियर इन्हें? नहीं. तो आप लोगों ने बात की थी नीज की, लेग्स की, पेन है, प्रॉब्लम्स हैं. तो आज जो है अंजना उसी पे बात करेंगी. ओवर टू यू अंजना. थैंक यू एवरीबडी. आप सब ज्वाइन करने के लिए, अपने टाइम के लिए. आई सो अप्रिशिएट योर टाइम. थैंक यू उस्मा. एंड यस, मैं एक्चुअली ये सोचती हूँ कि हम शायद कभी भी सीनियर नहीं होते. जब तक दिल जवान है तब तक हम भी यंग है. दैट्स हाउ आई लुक एट इट, यू नो. और मैं हमेशा, पता है, सीनियर्स के लिए एक मेरा वर्ड है, आई कॉल देम एज रिसाइकल्ड टीनेजर्स. So this is what it is. Very good. Let's get started. I'll share my screen so that I hope you all can see. Yeah. Yes. Yes. Okay. Okay, so let's get started. This is today's. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी. तो ये जो आज का योगा सेशन, जैसे हमने, मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है, इट इज फॉर ऑल एक्स एंड पेन्स. सो इसमें इट्स अ वेरी सिंपल योगा प्रोग्राम जो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि बता सकूं कि एक्स एंड पेन्स क्या हैं, कौन से होते हैं और उनसे हम कैसे जूझ सकते हैं. बिकॉज अगर कोई कहता है कि मुझे कोई एक्स एंड पेन्स नहीं होते, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट एज वी एज, जैसे ही हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स, हमारे लिगामेंट्स, जिसमें ल्यूब्रिकेशन कम होनी शुरू हो जाती है, और भी बहुत रीजंस होते हैं, बट एक्स एंड पेन्स आने शुरू होते हैं. So, you know, it's a very simple kind of a lifestyle which we can start developing. और मैं हमेशा कहती हूँ, अगेन, योगा के लिए कोई एज नहीं है, स्टार्ट करने के लिए कोई स्टेज नहीं. कभी भी दिल कर रहा है कि आज आपको लग रहा है 60 के हो, अभी भी शुरू कर सकते हो. गो स्लो. अपनी बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है. हमने अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना और अपनी बॉडी को सुनना है. धीरे 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 कैपेसिटी बनती जाती है. और मैंने एक ये चीज जरूर नीचे लिखी है, क्योंकि कई बार होता है, मुझे लोग कहते हैं, अंजना जी आप हमें बताओ कि हम ये करें कि नहीं करें. इसलिए मैंने आज अपनी स्लाइड में ये बड़ी क्लियरली लिखा है कि आई एम नॉट अ मेडिसिनल डॉक्टर. सो प्लीज कभी भी ज्यादा अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए. कईयों को जैसे हार्ट इश्यूज हैं, कईयों को कोई और इश्यूज है, तो एक बार पूछ लीजिए कि क्या मैं ये रिजीम कर सकती हूँ. जैसे जुम्बा है, मैं कहती हूँ जो हार्ट, जिनको बीपी है या इश्यूज है कार्डियो की, आई टेल देम टू गो स्लो, बिकॉज जुम्बा इज लाइक, आई डू जुम्बा फॉर सीनियर्स ऑल्सो, बट आई ऑलवेज से दैट बी केयरफुल एंड सी कि आपकी बॉडी क्या कहती है, और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए. सो आई एम जस्ट गाइडिंग हियर. अब जो हमारे टाइप्स ऑफ लोअर बॉडी जॉइंट्स एंड मसल्स पेन, अब जैसे जो पेन्स हैं, नॉर्मली या तो आप इससे अगर कहोगे कि मसल पेन है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये बड़े बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं. बट हमारी एक एक जॉइंट जो है ना, वो इतनी सारी लेयर्स के साथ बना हुआ है कि उसमें लिगामेंट्स भी हैं, उसमें सॉफ्ट टेंडन्स भी हैं, और जो मेन जॉइंट है वो बोन का है. सो दीज एक्स एंड पेन्स कैन बी अराइजिंग फ्रॉम एनीवेयर. सो जब भी हम बात करते हैं लोअर, जैसे कहते हैं कि हम अपने बेली के नीचे से बात शुरू जब करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज्यादा लोअर बॉडी पेन्स होती हैं, वो आपने सुना होगा, या लोअर बैक पेन है, या हिप पेन है, या नी पेन है, या फुट एंड एंकल पेन है. सो वेरी मैं हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कह दूंगी. जैसे लोअर बैक है, नॉर्मली होता है, जैसे जब आप अपना MRI कराओ या व्हेन यू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड, दे विल टेल यू इट इज L5, लाइक इट्स नॉर्मली द लेवल्स ऑफ योर डिस्क. सो दे विल टेल यू कि जी कौन से में पेन है, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कहाँ पे इश्यूज हैं, दे टेल यू दैट. उसके लिए बड़े स्पेसिफिक, अब जैसे हमारी एक्सरसाइजेज हैं, नॉर्मली जब किसी को बैक पेन होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड नहीं करो. बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम फट से कह देते हैं कि जी हमें बॉडी या स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बट पीपल विद बैक पेन शुड अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग. हिप पेन्स हैं, वन वेरी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एशियंस हियर, तो इफ यू रिमेंबर, हम लोग बहुत ज्यादा वो स्क्वाट करते हैं. अगर आपको याद हो, हम इंडिया में भी अपने स्क्वाट करते हैं.
अगर आप जितना भी जैसे भी कर सकें, चाहे थोड़ी देर के लिए 2 चीजें स्टूल पकड़ के भी करना पड़े, थोड़ी देर अपने नीज पे बेंड होके पूरा नीचे पैर को स्ट्रेट करके अगर आप बैठ सकें, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हिप ओपनर्स। तो हिप्स को अगर स्ट्रॉन्ग, हिप पेन तभी कम होगा अगर आपके जो हिप के जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आई डोंट पद्मासन हम कहते हैं, या पलाटी मार के जैसे बैठ के कहते हैं, जैसे क्रॉस लेग्ड होती है, आप वो भी कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, और अदर देन हम अपने नीज नीचे लटकाए, पैर नीचे लटका के बैठे या नीज को अंदर करके बैठे, एक क्रॉस लेगेड पोजिशन, उसको हम कहते हैं ना क्रॉस लेगेड पोजिशन, पलाटी मार के बैठे। तो ये जो कुछ है ये हिप ओपनर्स होते हैं। तो कोशिश करके वो एक्सरसाइज करिए। अगर आपको लगता है हिप्स में पेन है तो धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ बनाना है हिप ओपनर से। नी पेन बहुत 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 कॉमन है। आई विल गो टू नी पेन एंड द टाइप्स ऑफ नी पेन, बट जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ अस वी विल फेस दिस नी पेन once or twice or so many times in our lives, you know, as we age, more so especially when you are climbing up the steps, you are coming down the steps, you are doing a little bit more of a walk, you will start feeling वो, because हम कहते हैं ना कि जैसे joints जो lubrication है, तो basically हम लोग कहते हैं कि पेन नी में है, बट जो मसल उस नी के ऊपर होता है, अगर आप उस मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका नी पेन कम हो जाएगा। ये बहुत रेयर होता है कि लोग या डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि जी आप पहले मसल स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रेट अवे कहते हैं हाँ इश्यूज हैं, उसकी हम सर्जरी कर देते हैं। जैसे ही लगता है नी पेन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट वर्किंग ऑन द मसल, स्पेशली जो आपकी थाई मसल्स है, क्योंकि वो मसल जाके आपके नी के ऊपर कप करता है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका नी झटके ले सकता है, आपकी स्टेप्स ले सकता है, आपकी अप एंड डाउन क्लाइंबिंग ले सकता है। और वहीं से अगर शुरू होता है, अगर नी में प्रॉब्लम है, जितना पेन है वो हमारे पैरों में आना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब जब आप खड़े होंगे, जब जब आप चलेंगे, नी ऑलरेडी वीक था, नी प्रेशर नहीं ले सका, नी ने सारा प्रेशर नीचे फेंक दिया, क्योंकि ऊपर तो ग्रेविटी के ऊपर अगेंस्ट जाएगा नहीं। दैट पेन इज गोइंग टू गो डाउन टू योर फुट एंड देन टू योर एंकल। आप कई बार सोचोगे बैठे बैठे, ओ गॉड मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, मेरे पैर और एंकल में क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ऊपर नी का पेन, बॉडी का वेट, खड़े हो गए, पूरा का पूरा प्रेशर फुट एंड एंकल पे आता है। तो देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टू मेक योर फुट मोर स्ट्रॉन्गर। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, पैरों के नीचे एक टेनिस बॉल रख के, दोनों जो हमारा हील और टो के बीच में जो पार्ट होता है, आप अपने बेड पे बैठे हो, टो के नीचे वो टेनिस बॉल रख के थोड़ी टाइम रोटेट कर दीजिए एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उससे जो पैरों के नीचे जो फाशिया होता है, दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सो दैट इज एबल टू होल्ड द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी वेट एंड द प्रेशर ऑफ द बॉडी। Now the causes for the lower body joint and muscles pain. First important क्या है? Wear and tear. वो like I said, कई चीजें हैं जो हम एज के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार होता है कि चीजें हमने ओवर, जैसे कहते हैं ना, चलने फिरने से रोज का एक वेयर एंड टेयर तो होता ही है, लेकिन वेयर एंड टेयर का ये मतलब, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि जी मेरा तो वेयर एंड टेयर है, मैं तो जी बहुत चलती हूँ, मैं तो 15,000 स्टेप्स चलती हूँ, जी मैं तो बहुत सीढ़ियां चढ़ती हूँ, इसलिए वेयर एंड टेयर है। नो, you have to start working towards making your muscles and your joints more and more stronger so that they can take the daily wear and tear. Daily wear and tear के बाद next point आ जाता है overuse. मैं इसमें एक और word use करती हूँ, where we say we abuse it. तो बॉडी, जैसे कहती हूँ, हर टाइम आप लोग, यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी. There are times when the body will tell you it cannot walk longer, but you're still wanting कि आज मैंने 10,000 steps करने ही करने हैं. Listen to your body. If it is feeling tired, if your legs are hurting, don't do that. Don't do it. It's okay if you're not doing those steps. You will do it tomorrow, but the minute you abuse your body, it is going to retaliate and give you back more aches and pains. Then like injuries in joints, bones and muscles, ये खैर आप लोगों के लिए इतना it doesn't take hold. It's mostly for people who are in the gym, who get injuries with weighing machines, or they are on the treadmill and they are doing and they get an injury or something like that. It's more for them. Joint inflammation.
मैं बहुत ऑफ्टन कहती हूँ कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में जब आती है तो वो सबसे पहले हमारे गट में आती है. We all have to start learning to keep our gut healthy. गट का मतलब है जो हम खाना खाते हैं. अगर हम खाना खा रहे हैं, बैलेंस्ड खाना है, हेल्दी खाना है, हमारी स्लीप प्रॉपर है, सुबह हमारा बाथरूम की रूटीन प्रॉपर है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा. प्रोबायोटिक्स खाते हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा. 99% of the diseases start from the gut and start from the inflammation in the gut. Gut में अगर inflammation होगा, it is going to spread to different parts, more so on the joints. Medically, there are many things like urea and other things. I will not go deep into that, but my main focus to tell you is joint inflammation will start if your gut is not keeping well. So go back and see कि क्या मेरे खाने में कुछ changes कर सकती हूँ, क्या मेरी bathroom routine में changes कर सकती हूँ, क्या मेरे sleep pattern में कर सकती हूँ, क्या मैं mentally okay हूँ, I'm in a negative thought mode lot of time, because these stresses also increase the inflammation in your body. So, like it is, everything is connected. When I say yoga, I always say it's mind, body, and soul. Why should I say mind, body, and soul? Because we are all interconnected with it. So you में से अंजना खाने से मेरे joint में क्यों pain है? Because आप कोई ना कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपको inflammation दे रही है और जो आपके joint में inflammation दे रही है. So always go back and watch what you are eating, what you are not eating, or something which is triggering, and then try to start eliminating. And then मैं हमेशा कहती हूँ, it's an you have to like I'm forgetting the word, trial and error method से करना है कि आज अगर मुझे हफ्ते के लिए कोई चीज लग रही है, मैं खा रही हूँ और मेरी I am not feeling too good, eliminate and see are you feeling better. Like I said, body एक thermometer की तरह respond कर देता है immediately, या within a day or two आपने कोई चीज छोड़ी, आपकी body respond करेगी whether you feel good or whether you don't feel good. Coffee से, caffeine से, there are so many things where body responds and tells you. So you should listen to your body. Now the types of different types of leg pains. So first important is identifying the symptoms and their onset can help find out an appropriate diagnosis and treatment. So this is very, very, I would say more orthopedic, where I say कि अगर आपको लग रहा है कि कोई pains and aches हैं, first just try to write down your symptoms and then see are they aggravating, and then I feel you need to have a proper diagnosis and a treatment. हम घर में बैठ के we cannot just say कि चलो आज मेरी joint में pain है, अच्छा तो चलो ये arthritis है, तो चलो मैं इसके लिए आज Voveron खा लेती हूँ. No, you need to watch it for maybe 3-4 days. Go back to your family doctor, tell him I need an X-ray, tell him I need an ultrasound, tell him I need an MRI, because until you go to the root, you will not be able to treat it. Simple home remedies can be done, but after a certain age, I feel we do not need to give it much time, because as we age, the body's capacity to get better on its own reduces. It is not able to pick up fast. It's not able to recover and recreate itself faster. So if you are able to get it diagnosed in a proper time, get the proper treatment, you are in a better boat of life. You will, ये कहते हैं ना वो, you will nip it in the bud. तो पता है कि आज बीमारी का पता चल गया है, उसका इलाज सही हो रहा है. अब I mean I have something which I can share. Like मेरे एक senior हैं, वो आंटी, उनका she was hale and hearty, like in suppose 6 महीने पहले उनके दांत में दर्द था. 2-3 बार उन्होंने निग्लेक्ट किया. हम लोग ने 2 बार बोला कि आप अपना एक्सरे कराओ. कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, अल्सर्स हैं, मैं अल्सर्स की दवाई लगा रही हूँ, उससे ठीक हो जाएंगे. I mean, ये exactly 6 months के gap की बात कर रही हूँ. And we pushed her to go and get an ultrasound. Finally, after 2 months, she goes for an MRI and an ultrasound, and पता चला that it was a 3rd stage of cancer in her mouth. And we lost her. She was gone in 3 months. 3 months. So had she got it tested, had she got, I mean, that's what I'm saying. Don't wait and watch, and don't ignore, don't avoid. These are the things which are very, very important. So you get yourself tested. एक बार पता चल जाता है, तसल्ली हो गई, then you know कि आपका treatment, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका 4 महीने का treatment है, 2 महीने का है, या जैसे भी है. So then you know you're on the right path. So this is something what I saw, I observed, so I felt like sharing it.
Causes for a few hip and leg pains. Now, arthritis is something very, very common. And it's arthritis is not only knees, it is in any joint of your part of the body. Like लोग मुझे कहते हैं ये arthritis मेरे knee में है. मैं कहती हूँ ये simple joints हैं ये वाले. You can get even arthritis here. Any joint, जहाँ पे bone से bone मिलती है, that's called a joint. Any joint can have arthritis. So you need to get yourself tested, screened, and know what is the cause if it's lingering for too long. But yes, sometimes there are some aches and pains. You know कि आपने कभी ज्यादा आगे झुक गए हो, कभी ज्यादा हाथ ऊपर किया है. अगर आपको वो रीजंस पता है खुद सामने से, तो चलो यू नो आपने टाइलेनॉल खा लिया, एक दो इब्यूप्रोफेन खा के पेन किलर्स 4-5 दिन में, you see if it's giving you relief, then you know it's something temporary and it is a repercussion of your action. But if it's anything lingering, you need to get yourself tested. Bursitis hai, dislocation hai, slip disc is so common. But again, there is a where people say, oh, I know it's a slip disc hai, 4-5 दिन मैं rest करूंगी, ठीक हो जाऊंगी. Trust me, it's not so simple. There are times when one of your disc is out of its column, and that pressure from all the other cartilages are coming, because disc is actually वो bones के बीच में ना एक cushioning होती है. तो कितनी बार होता है, and it is very very common. Like मैंने जब last time backache की बात की थी, slip disc is very common. What will happen sometimes if you have done a bend or something which is not normal or out of the routine आपने किया है, तो वो जो disc होती है that slips out. तो जब एक बोन और दो बोन के बीच में वो कुशनिंग नहीं रह जाती, तो वो जब आप वॉक कर रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो दोनों बोन्स आपस में रगड़ रगड़ के आपका पेन शुरू करेंगे, इन्फ्लेमेशन शुरू करेगी, और उससे कई बार होता है कि कोई ना कोई लेग की नर्व्स प्रेस होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों बोन्स के बीच की कुशनिंग नहीं है. सो गेट एन MRI डन. Know what is happening. Just don't take painkillers. Get a proper treatment done so that it doesn't linger on, because normally if one disc slips out, if there is too much of pressure, it starts compressing the other discs also. And spine is the most important part of our body. Morning, evening, everything we do is on all. They always say a healthy spine is a healthy body. So please focus on a few things whenever you feel they're out of the routine. Focus on that. Of course, sciatica is again very common. I don't want to talk too much about it, but these are the things which you may want to ask a doctor if you have some issues. Tell them, the doctor, could it be arthritis, could it be sciatica, or I want to get tested. So they know that you are aware that this could happen. And then the tendinitis. How do we prevent knee and leg pain? Most important, we all know, we all watch videos, we all go for Zoom calls, but exercise is not something that everybody has it in routine. And especially ladies, let me be very, very frank, because all day long we are doing work for the kids, our housework, for the family. If we are working women, if we are entrepreneurs, we are running around, and we feel that is the most important thing, and exercise takes the last seat. Exercise is the most important thing. I did mention in my last time presentation, make it a point. If you're getting up, get up half an hour early. Do your few bends, forward bends, whatever routine you do at home. Do it so that you are ready for the day, ready for the pressures of the day. Because if you are like we eat 3 times minimum in a day. Body needs the exercise. So why are we skipping? We don't skip food. We don't skip sweets. We don't skip tea. So why should exercise be skipped? So please make it a routine that exercise should be done every day. Whether 20 minutes, whether half an hour. Even on a holiday, now you'll say, Anjana, हम तो 5 दिन करेंगे, बाकी 2 दिन नहीं करेंगे. मेरा question है, Saturday, Sunday को आप खाना नहीं खाते? सैटरडे संडे को आप चाय नहीं पीते, तो फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं करें? कम कर दीजिए, आधा घंटा करते तो 20 मिनट कर लीजिए. बट मेक एक्सरसाइज a mandatory routine for yourself, and especially as we age. I continue use the word age because it's not that we feel old, but the cells in the body are getting old, though they get regenerated every few days.
but the way body ka metabolism becomes very, very slow. So exercise actually, it's like an oiling. It's like a jaise car ki hum maintenance kar rahe hain. So as the minute we are turning 40, 45, we need that maintenance. Whichever form is a choice what you will make. Know your safe limits. This is something which I just mentioned when you have injuries or when you're overusing. Like I said, if you're doing a Zoom call पे suppose आपको एक class है, जैसे मैं class कर रही हूँ and I'm doing something, मेरा हो सकता है कि मेरा हाथ सीधा ऊपर जा सकता हो, आपका नहीं जा सकता. You should know your safe limit. You may get encouraged, oh, Anjana is doing it, let me do it. Oh, gee, Zubda ji is doing, I can do it. But listen to your body. Can your body do it? No, it's hurting or you're not comfortable. Leave it to the point where you are comfortable. Do it a few days. Once the body is used to it, once your body has become flexible, once your body has become stronger, you will be able to do it better. But you're building step by step. You know, like you from step 1, you don't go to the ladder step 10 right away. You go to step 1, then you go to step 2, then you go to step 3. So you know what? You need to respect the safe limits of your body. That is very, very important. Then, of course, is the weight control. I know it's a very big issue we all face. It's easier said than done. But trust me, we all, and especially after menopause, it's very easy to put on weight and very difficult to lose weight. हमेशा कहते हैं ना वो चीज जो भी आसान होती है वो जल्दी हो जाती है और जब उसके ऊपर काम करना पड़ता है it takes time. बट मैं कहती हूँ जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना एफर्ट लगता है उसके लिए. हर अच्छी चीज के लिए एफर्ट लगता है. नेगेटिव थॉट्स ना ऐसे आ जाते हैं. पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए ना एफर्ट करना पड़ता है. हेल्थ अनहेल्दी खाने का तो दिल फटाक से कर लेता है, लेकिन उस अनहेल्दी खाने के ऊपर हेल्दी चॉइस करने के लिए ना एफर्ट करना पड़ता है. टीवी देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेडिटेशन में बैठने के लिए ना एफर्ट करना पड़ता है. सो हर अच्छी चीज के लिए एफर्ट करना पड़ता है. सेम गोज फॉर द बॉडी वेट. It's okay. We have put on, we don't have to feel guilty. It's okay. We didn't think about it, but it's never too late. You have to start knowing what your eating limits are. You have to start zipping up your mouth where you have to. It is difficult, but again, baby steps every day. Don't feel guilty. That is the most important thing. We are all human beings. Sometimes we do have cheat days. But next day, go back to your routine. Like normally we say, you know, when you eat anything unbalanced or not in a good routine, your gut or the microbiome, like in the gut, there are microorganisms. So that gets unsettled. And then that causes inflammation and then that causes disease in the body. But to refix that gut or the microbiome of the gut, it just takes 3 days. So you know what? If one day you have cheated, next 3 days, see to it that you eat in an aligned way so that you get the microbiome of your gut back into its normal and a healthy position. And pull each other up. If you are friends, if you know you're going to eat pakoras, you know, you say, okay, you know what? Let's ditch pakoras and let's have something baked. You have to pull each other out of it. It's easy to get driven into it. You should cook at home. It is so easy to go out. Oh, I'm tired and I don't want to eat. I don't want to cook. So you're picking something up. Try to prep your meals beforehand. You never know. You may be tired tomorrow. So if on a weekend you have 1 hour, just do the basic prep and keep it. So that even if you think of eating outside, you will push yourself and say, no, you know, this is made in the house. I'm not going to eat out. Self-discipline is very important. Yoga is one thing that taught me long time back that self-discipline is very important. Like I also like to eat chatpat. I am also going through menopause. But you know what? I push myself and say, no, so many years I've kept a discipline and I have to continue doing it. So it's very easy. So weight control is difficult, but not impossible. So if you make up your mind that I have to slow and steadily work on it, trust me, you will, with those baby steps, with that balance and regime, you will be there. It is a little bit of hard work, but you will love the results. When you lose weight, you love to see yourself back in the mirror and say, you know what, I'm so proud of myself. I have gone from where to where.
It's a journey. And this journey is never difficult and it's never easy. It's just how you take it. Regular stretches is so important. I always say whenever you're doing any exercise, always see to it that you warm up. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कोई भी योगा शुरू कर देंगे, वो वीडियो लगा के या पिलाटेस या जुम्बा या कोई भी क्लास, बट उन्होंने वार्म अप नहीं किया होता. अगर आपने बॉडी के थोड़ा बहुत हिला के बॉडी को वार्म अप नहीं किया हुआ है, तो बॉडी में अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी आपने एक्शन ऐसे कर ली जो ड्रास्टिक है, उसमें आपको एक्स एंड पेन्स आएंगी ही आएंगी. और कई बार होता है कि वो टेंडन स्ट्रेच हो गया, लिगामेंट स्ट्रेच हो गया. So many times I have hurt my ligament in yoga classes. I'll be frank. कई बार मेरी योगा क्लास है, मैंने घर से वार्म अप नहीं किया, जल्दी में I have gone for a yoga class to teach in a studio. I didn't do a warm up and I get into it and I just do a little bit of it and I start, because we have a timed class. So I cannot spend 30 minutes only in warming up. So maybe I just did a 5-minute and I went. When I come back, I know that my body or some part of my body where I had not done a proper warm up is hurting me. So do your regular stretches and do your warm-ups. Trust me, these regular stretches are going to go a long way. I don't mean that by regular, it will bring a lot of flexibility. I don't mean you will become like a ballet dancer, but these regular stretches, these flexibility, you will feel day-to-day life actions, and whatever you are doing helps you. Even to reach out to something, to bend down to get something, to pull out something, you will feel that your body does not hurt on simple chores of life. छोटी छोटी चीजें करने में आपकी बॉडी तकलीफ नहीं देगी. अगर आपके स्ट्रेचेस होंगे, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो घर के रोजमर्रा की चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेगी. लेकिन यही अगर आपकी स्ट्रेचेस नहीं है, अगर आपकी बॉडी जॉइंट स्टिफ है, आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें भी इतनी मुश्किल लगेंगी कि यू विल से कि इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मेरे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है that you take out time for your exercises and for your stretches. चाहे आप 10 minutes की स्ट्रेच करें, खड़े खड़े हाथ को ऊपर या पैरों को नीचे का हैंड्स रख के थोड़े से लेग्स मूव करें, बट कीप डूइंग इट, बिकॉज रेपिटेशन से जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी आती है. एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, डोंट डू इट. I very frankly, openly say, please don't do that. It's abusing your body. I see so many people, I ask them, कितनी बार, ओ हफ्ते में 2 बार कोशिश करके कर लेते हैं. मैं उनको कहती हूँ प्लीज वो 2 बार भी मत करें आप, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है, तो बॉडी में तकलीफें ज्यादा, एक्स एंड पेन्स शुरू हो जाते हैं rather than helping them out. My next point is don't sit for long periods. This is something from COVID we have been talking about, that after every half an hour, just get up, just walk for 5 to 6 minutes by the watch, 5 or 6 minutes, and then get back to sit. Because सबसे ज़्यादा जो harmful effect बैठने का है is on the hips and the spine. Very, very crucial. Because all the time that pressure is on the hips, and naturally we are all the time not sitting with our spine straight, so that pressure is on the spine too. Either we'll keep cushions and we'll sit like this, or we are always sitting like this. So the spine is not aligned, and spine perpetually needs an alignment. Even if you're sitting on the bed watching TV, go right at the back of the what do you call, the head of the back, and sit up straight. Sit up straight. Put a cushion, but try to keep your spine stretched and straight. Make it a conscious effort. You may sit, you may not remember. जैसे ध्यान आता है, sit up straight. आप चेयर पे बैठे हैं, don't slouch. Sit up straight. Position, अपना जो alignment है, आपकी जो position बनाते हैं आप, वो आपके ऊपर है. अगर लंबे hours में बैठना है, keep moving your legs under the table. You can do that, because if you're at home or you're working from home, you can move that. You can just move your arms. You can shake your leg, your neck. But after every 30 to 40 minutes, move out, walk for 5-6 minutes. Pani. I've seen people will keep a bottle of water and sit. नहीं, हमने पानी तो पीना ही पीना है. Most important thing, your reason to get up will be water, will be going to the washroom. Don't keep chips next to you. Don't keep chocolates next to you. Don't get your cup of tea next to you. Get up, go, eat 2 chips and come back.
Get up, go drink that water and come back. That is what is going to make you forcefully move. I'm just sharing a few things in the practical life, which will actually, you can easily imbibe and which can help you. Then wear proper footwear. This is a big, big, big must. And especially I tell to all my seniors. When there are functions, I see my senior aunties and all coming with some heels, block heels, and then kabhi pair teda ho gaya, kabhi pair kuch ho gaya. I always tell them, I said, auntie ji, comfort और पैर की हेल्थ से ऊपर ये नहीं है. We don't need to do it, because tomorrow one bend of the leg, God forbid you tumble or God forbid you hurt yourself, it's going to keep you in bed for months. Like I said, we don't get well fast, we don't recover fast, we don't recoup fast. So for God's sake, I insist, especially seniors, please spend on good footwear. It should be a balanced footwear. It should give support to your feet. It should give cushioning to your heels. It should be something which is steady on the ground, more so because for 5 months we have cold, snow, slippery conditions. You have to be so careful of your footwear. Get shoes which have those grooves so that even if you are walking a little bit on the snow, you don't slip. There are so many. Yes, that's why I said, when I say proper footwear, I know it is expensive. Some of the things are not covered in insurances or OHIP. But rather than spending on doctors, other things, spend it on a good footwear. Then drinking the right amount of water. You will say, Anjana, out of the blue now, this right amount of water, what does it mean? Why is it needed for knee and leg pain? The reason is because our joints need lubrication. And I told you, every bone to bone joint together is a joint. Our ligaments, our joints, our muscles, our body is 75% water. So if the water is less, if you are dehydrated, your joints are going to be dry. They're going to rub against each other. There's no lubrication. It's going to cause you a lot of hurt. So important part is, see that you drink the right amount of water. And the best thing, again, if I come back, keep the water away. You're sitting, you know you have put an alarm that after every 1 or 1.5 hour, I have to go and drink water. वो alarm बजेगा, उठ के जाएंगे, वो पानी पिएंगे, तो आपने walk भी कर ली, बैठे भी नहीं रहे, पानी भी चला गया, joints भी चल पड़े और joints में lubrication भी हो गया. So things are very easy if we actually start working on them, if we start realizing the importance. And there are very simple changes you have to make. Till here, any questions? I don't mind waiting, and then before I go to the next 7-8 slides. Yes, please. Hanji, बोलें जी. Yes, हाँ, मेरे 2-3 questions जमा हो गए. हाँ जी. पहला तो एक है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि if you do exercise or walking 5 days in a week, ये नोशन बना हुआ है या कह लो कि मिथ है. आपका इस पे क्या प्रतिक्रम है? मैंने जैसे बोला कि कनवल जी, आंटी हम रोज खाना खा रहे हैं ना, या तो सैटरडे संडे. मैंने अगर 5 दिन खाना खाना है तो मैं उसमें बोलूंगी कि प्लीज 5 दिन ही एक्सरसाइज करो. अगर खाना 7 दिन है तो 5-7 दिन एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, बाकी 2 दिन आधे घंटे की जगह 5 मिनट कर लो आप. ठीक है, इसका तो जवाब आ गया. लेकिन अभी आप बात कर रहे थे वेट कंट्रोल में, कि वेट शुड बी विद इन द लिमिट्स. वो एक तो होता है ना, टेक्निकली हो गया. एक अगर आप ठीक समझें तो इस पे अगर आप बता सकते हो कि वेट कंट्रोल के लिए जो होम रेमेडीज हैं, खाने पीने की है, वो क्या किया जा सकता है. एक तो जैसे कि जर्नल है ना कि आप जंक फूड ना खाओ, ये ना खाओ, तला हुआ ना खाओ, ये ज्यादा ना खाओ, वो तो ठीक है. अगर टेक्निकली मेडिकली अगर इसमें कुछ है तो आप अगर हमें बता दें तो वो ठीक होगा. और इसी के साथ मिलता यह है कि जैसे यहाँ से मांस लटक जाता है ना, तो उसका भी ये जैसे है ना, ऐसा हो जाता है ना. तो इसका बड़ा सिंपल है. ये मैं बड़ा सिंपल है. मैं जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इस पे वेट्स करो. पुराने जमाने में वेट नहीं होते थे. 2 बोतलें पानी की जो भरी होती है ना, पानी हम रखते हैं गाड़ी में, वो पीते हैं जब कहीं आते जाते हैं. वो मिनरल वाटर की जो बोतल होती है छोटी वाली, वो अपने पास रख लिए
और अपना दिन में कम से कम 10 मिनट लगाए, वो बोतलें हाथ में पकड़ी। बहुत सिंपल है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि हमारा मसल्स लूज हो जाता है और इस पे हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, टांगों की फिर भी करते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। सो वी नीड टू वर्क ऑन द ट्राइसेप्स एंड द बाइसेप्स। सो उसके लिए 2 वो मिनरल बोतलें पकड़ी और वेट्स कर लिए, घर में बैठे बैठे अपना 10 बारी ये कर लिया, 10 बारी ये साइड में कर लिया, 10 बारी ऊपर कर लिया, एंड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फील दैट योर स्ट्रेंथ इज कमिंग बैक एंड योर मसल इज बिल्डिंग। वन लास्ट क्वेश्चन, वन छोटा सा, आप कहते हो कि sufficient quantity of drink the right amount of water and it will act as a lubricant to your joints. तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि water क्या does this water works as lubricant for our joints? No, water is a medium. Yeah. आपके जैसे बॉडी हम कहते हैं 75% वाटर है, तो ये नहीं है कि खून भी तो लिक्विड है ना। तो वो जो ल्यूब्रिकेशन है जॉइंट्स की, दैट इज आल्सो अ लिक्विड। सो बॉडी गोज एंड फॉर्म्स डिफरेंट एंजाइम्स एंड डिफरेंट वेज टू हेल्प दैट गेट दैट ल्यूब्रिकेशन। इट्स नॉट दैट दे आर मेड ऑफ वाटर, बट जैसे आप देखोगे कई बार जॉइंट्स में अर्थराइटिस में दे डू अ टेस्ट वेयर इंजेक्शन से वो लिक्विड निकाल के दे टेस्ट इट। सो दैट इज नॉट वाटर, बट इट्स मिक्स्ड विद एंजाइम्स एंड देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन इट, बट बॉडी वाटर इज योर मीडियम। जैसे अब हम सब्जी बनाते हैं तो पानी डालते हैं, लेकिन वो करी बन जाती है ना, वो पानी तो नहीं रह जाता, तो वो करी बन जाती है। तो दैट्स हाउ। वेरी राइट, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। हाँ जी शांता जी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बैठी हुई हूँ अभी कुर्सी पे सुखासन में। I'm talking from my own experience. I started doing yoga, I must have told you before, when I was 70. I have never done yoga in my life. I dance, I do other things like Zumba किया हुआ है, सब किया, exercise किए करती थी, लेकिन never done yoga. I couldn't sit on the floor. So my yoga teacher, I told her, I'm sitting on the chair and doing, when I can sit, I can. Abhi, within 6 months, मैं नीचे बैठती हूँ, I can sit on Vajrasan, I can sit on Padmasan, I can do that. I'll be 74 in June. So I feel I have achieved something, whatever little I have done. और आप वो पानी की बोतल बोल रही थी ना, I use soup cans. वो छोटे सूप कैंस होते हैं ना, नॉर्मली पानी, शांता जी पानी सबके घर पे होता है ना, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सूप कैंस नहीं बोले, क्योंकि सूप कैंस में आप मुझे नहीं पता क्या ले रहे हैं, उसमें सोडियम इतना होता है। तो I buy soup can just for exercise. बस फिर ठीक है। I don't. I straight away said water because water is in everybody's house. Yeah. उसके लिए now कोई water bottles we don't have it. Water bottles we don't have. I have the regular bottle. So and another thing I was going to say, पानी डाल के कार में ले जाते हैं, अगर वो आपके पास वो बॉटल्स भी आप में जो पानी डाल के आप अपना ले जाते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, और एक बात बताना चाहती थी, drink right amount of water. I read somewhere when you're drinking water, हम खड़े खड़े ऐसे पानी पीते हैं, you should always sit down and take sips. Don't guzzle the water like that. एक sip लो, that helps and it goes every part of your body. That's what I've heard. I just wanted to make sure whether I read it. इसके लिए ना, it is a very thing close to my heart. मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपने ये पॉइंट उठाया, I'm happy you picked it up. तो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि खाने से 1 घंटा पहले अगर आप पानी पीते हो तो वो अमृत है। आप खाने के साथ पानी पीते हो तो वो जहर है। खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीते हो तो वो बल है। So you should know when to drink water and for sure खड़े होके पानी नहीं पिए, जब भी पीना है बैठ के भी, चाहे 2 सिप भी पीने हैं बैठ के पियो, so that it goes where it is supposed to go. But खाने से 1 घंटा पहले अमृत है, खाने के साथ जहर है, खाने के बाद बल है। So if you remember this, you will start imbibing like an Shanta ji, I'm so proud कि you felt के baby steps करके आपने भी कोई overnight तो achieve नहीं किया, 4 साल कह रहे हो आप। Yeah. तो baby steps लेने पड़ते हैं, लेकिन commitment,
मैं Yeah. हमेशा कहती हूँ शरीर क्या कहेगा, ओ यार आज छोड़ यार, आज बारिश का मौसम है, आज एक्सरसाइज का मूड नहीं है, आज नहीं नहीं, रोज बॉडी को कहना है कि आज भी मैंने करना है। टाइम आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों की टाइम कमिटमेंट्स कैसी हैं, बट एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए शाम तक बिल्कुल कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। पानी आपने के जो साथ में वेट ना, का कहा ना, आपने वेट का कहा, आई डू इट लॉट ऑफ टाइम्स व्हाइल आई एम वाचिंग टीवी. हाँ, वो डू Watching यू TV. फाइंड एनी डिफरेंस? Yeah, look at my, I don't have any weight control आप बोल रही हैं. I am the same weight last 6-7 years. I am little chubby. That's But okay. that That's is my body metabolism. That's my your body metabolism. structure. Yeah, Ah. yeah. But I am diabetic, but under control. My doctor is happy. My nurse is happy. So I feel what I'm doing is probably right thing. For so, sure. So why bother again to do extra things? Log bolte ye khao, that will be good for you. Your sugar control will be better. I said, whatever I'm doing last 20 years, I've been doing good. So I Yeah. should keep it that way. No, वो exercise का कहा ना, time नहीं मिलता है. आप TV देखते हो, why don't you do then? वो TV देखते मैंने वक्त. तभी बोला ना, आप देखिए मैं भी अभी आई कांट शो यू, बट मैं भी सुख आसन में बैठी हुई हूँ, मैं अपने सोफे पर हूँ, बट मैं सुख आसन, आई डोंट नो, आई कैन नॉट शो यू. No, I can show, probably you can see me Yeah, now. yeah. I'm sitting on the chair. Yes, yes. Cross-legged. So that's what. अब जो आप टीवी देख रहे हैं, नीचे बैठे हो, कुछ बेड पे बैठी हो, अगर प्रार्थना कर रहे हो, अपनी प्रेयर्स कर रहे हो, बेड पे बैठी हो, तो चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं हम सारे लोग. धीरे धीरे, पहले कई बार मुश्किल होगी, एक टांग सीधी करके सिर्फ एक टांग को फोल्ड करो, दूसरी सीधी करो, फिर थोड़े टाइम के बाद दोनों फोल्ड करके बैठो. धीरे 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 बॉडी आपको, मैंने हमेशा कहती हूँ, आप बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे, बॉडी आपको 100 टाइम्स उसका रिजल्ट देगी देगी. Absolutely, I 100% I agree with you. And like I said, weight control का शांता जी, मैं कहती नहीं कि जीरो फिगर होना है, हर एक का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है. आप अगर उसमें हेल्दी हैं, आपके बॉडी और ब्लड के नंबर्स ठीक हैं, you are fine. And I'm energetic. ऐसा नहीं कि I'm feeling sick. I have full energy from morning till night. I have full with energy. और वैसे बात नहीं है, खाने के बाद they say you should sit in Vajrasan for helping your digestion. That's why after eating, if I'm watching TV, I try to sit on Vajrasan for a little while and then sit in Sukhasana. I can't. शांता जी, उधर ना मैं थोड़ी सी वो हूँ, क्योंकि एज सीनियर्स ना, उन कईयों की मैंने देखा है नीज पेन होती है, व्रजासन puts a lot of pressure on the knees. No, you know what? You can keep cushion. I keep a cushion between my legs and my hips. So that is very comfortable. I always tell people कि आपको पेन होता है ना, तो पहले अपनी नीज को स्ट्रॉन्ग करके फिर बैठना शुरू करो, rather than putting a pressure on a knee which is already. Absolutely, yeah, you're right, correct. So Thank you. अंजना जी, एक वो पानी की बात हो रही थी, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी पियो, है ना, और खाने के बाद या खाने के पहले. तो इसमें एक ये भी है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर पानी पियोगे तो बॉडी को, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है. क्या ये भी मिथ है या रियलिटी है कि आप जितना पानी पीना शुरू कर दोगे आपको यूरिनेट करना पड़ेगा ज्यादा अगर पी लेते हो? वो तो नेचुरली है ना आंटी, वो तो आप जितना, हाउ मच एवर यू ड्रिंक, इट हैज टू कम आउट. सो इफ गोइंग फॉर अ टॉयलेट every 4 hours, it's okay, but whatever is the required limit, why do you want to drink anything? Everything has to be in balance. Why should you drink over your limit? Why? Everything within a balance is okay. Like people say I do this, like everybody does overdoing. या तो बिल्कुल नहीं करेंगे या overdo करेंगे. We have to learn to keep a balance. We don't need to overdo anything. Body will adjust if we are doing a balanced stuff. और टॉयलेट आ रहा है तो अच्छी बात है, डिटॉक्सिफाई हो रही है किडनीज, लेकिन मैं नहीं कहती इतना पानी पियो कि हर 1 घंटे में, और खासकर रात को उठ के टॉयलेट जाना पड़े. कोशिश किया कि सोने से 1 घंटा पहले लास्ट पानी पी के, बिकॉज एज वी गेट ओल्ड आपकी स्लीप, द क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो डिटोरिएट्स. And then if you're drinking water before sleeping, you are going to go to the washroom so many times, you're spoiling your sleep. And sleep is so important because your body regenerates only at night. Your body re-energizes only at night. So you need to give that importance even to the sleep. Right.
Good. I have one Anji, question. I had a problem with my stomach. It was so painful, terribly painful. Then I drank lots of water, and believe me, in the morning, it all went away. I didn't take. I think I took less water that day, and spicy food. जब आप very clear indicator for water is अगर आपको बहुत प्यास लगने के बाद आपने पानी पिया है तो इसका मतलब your body is already dehydrated. Mhm. So Yeah. that is a big meaning. कई बार लोग कहते हैं ना आपको याद नहीं रहता हमको पानी पीना, और जब बड़ी जोर की प्यास लग रही है that means कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो उसने वो पानी मांगा है. तो हमने कोशिश करनी है, वो जैसे आपने बोतलें अगर भर ली हैं, आपको पता है कि आपने 3 बोतल आज खत्म कर दी है पानी की, आपने देखना नहीं है पानी कब पिया था लास्ट के नहीं पिया था, आपका वो जो डे के एंड तक पानी खत्म करना है. ये नहीं कि प्यास लगेगी पीना है. एवरी हाफ एन आवर ड्रिंक. Now, one thing, is it gas formation is because of less water taking it? It depends what food you have consumed, what medications you are taking, what combinations you are taking. There are so many factors. Mhm. It's not just water. Gas could be for so many other things, for the food, for the spice level, for you. That is difficult to tell you. But like I said, keep your water levels to the brim and you will face lesser problems. Your skin will glow, your hair will be nice, because like I said, your body is made up of 75% water. So it's such a big part of your body. So, and like the whole body is running and functioning on that. And वो जैसे सेम बात है, गाड़ी अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? चलती तो पेट्रोल पर ही है ना. वो ल्यूब्रिकेंट तो बॉडी में चाहिए ना, तभी कहते हैं कि भाई पानी पीते रहो तो वो हेल्थी रहता है, आपके बाल अच्छे हैं, आपको भूख लगती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. अगर ल्यूब्रिकेशन है तो उस एंजाइम्स बनते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, सबका बेस तो पानी ही है ना. And this dry skin, is it because of less water intake? No, there are again many factors. It depends आपके रूम में क्या है, ह्यूमिडिफायर है कि नहीं, हीट स्ट्रॉन्ग है आपके रूम में चल रही है. Again, there are so many factors. कईयों का नेचुरली ड्राई स्किन भी होता है, कईयों की मॉइस्चराइजिंग कम है, बट अगेन आप पानी पीते रहोगे जितना पीना है, आपको ये सब इश्यूज कम होंगी. I think Harsha wanted to say हर्षा something. जी. मुझे पूछना था, मैं योगा करती हूँ अंजना जी, लेकिन वो आपने कहा वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करती, जैसे कपालभाति, लोम अनुलोम और ये तो प्राणायाम हो गए ना. प्राणायाम करती हूँ, तो इसमें भी मुझे वार्म अप एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? नहीं, प्राणायाम इज योर ब्रीदिंग, बट एक्चुअली जब योगा आसनास करते हो उसके पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा जो आसन करते हो उसमें हमें आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, टांगे ऊपर नीचे कर रहे हो, आप हो सकता है बैठ के उसमें, क्योंकि वो बॉडी की वो जो जॉइंट्स और जो लिगामेंट्स हैं उनमें वार्म अप नहीं हुआ हुआ ना, तो वो स्टिफनेस में से सीधा उठ के आपने एक्सरसाइज कर दी, तो कभी कभी वो होता है ना, कभी कोई डिस्क हर्निएट हो जाए या कभी लिगामेंट स्ट्रेच हो जाए, लिगामेंट टेयर हो जाए, इट कुड बी मेनी अदर थिंग्स. अच्छा, और दूसरा सवाल पूछना था कि वेट कंट्रोल के लिए सब कहते हैं कि राइस और व्हीट आटा बंद कर दो, तो इससे फर्क पड़ता है? आप मुझे बताओ हर्षा जी, इतने साल पहले हमारे सब लोग खाते थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी? ये आजकल के जमाने में ये छोड़ दो, सब कुछ खाइए बट बैलेंस में खाइए, सब खाइए, शरीर सब कुछ चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज नेचर से आती है वो आपको कभी नुकसान दे ही नहीं सकती. Thank you. Okay, I'll continue further. Simple home care for lower body pain. So like I said, कभी कभी जैसे aches and pains होती हैं, कभी कोई issues हो जाती है, कभी कोई तकलीफ हो जाती है, तो don't panic कि जी पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई. First try to rest. Give you a few days to rest, because कभी कभी body में जब ailments आती हैं तो it takes time to go back to normal. So rest as much as possible, especially when you have aches and pains. आज ache and pain है, आज shoulder दुख रहा है, कल मैं सुबह फिर आधे घंटे की exercise करने चली जाऊं. No, you are going to aggravate it. You need to take a step back, respect your body because it's not in place. Take a step back, rest for a day or two, and then see if it's become better, your pain become better, and the body's not hurting. Then you go back to a slower routine, and then pick up the pace for a better and the same routine what you do. Of course, take over-the-counter painkillers, because we are in this part of the world where you do not get the doctor right away. In India, you go to the chemist, they give anything. They will tell you.
But here, if you feel it's just a simple thing, you know, it's a small hurt, like sometimes my stomach is hurting, I know maybe I'm not feeling well, or suppose there's other reason, you know, it's a simple ache and pain, you're okay to take a over-the-counter pill, but you don't take it for days and days. You take it for 2-3 days, you take rest, you see that the painkiller and the rest has not helped, you know, it's time to go to the doctor, right? Compression socks, if the doctor, this is one thing I've been seeing a lot here in North America. I think this is mostly for people who stand a lot, who have jobs which are more standing, where they don't have a lot of blood circulation and where they have very base. So that is something only your doctor can suggest to you, but this is something which came to me. So if you feel you need, or there's not good circulation, talk to your doctor. I'm trying to just educate you with a few words so that tomorrow you can go to the doctor and you can say, अच्छा भाई कुछ compression socks किसके लिए होती हैं? How मैं क्या करना है? You can ask these questions and educate yourself. So you will know whether are you a good candidate, or are you a right candidate for compression socks, or you're not. Applying ice. This is one thing I've seen. We as Asians, sorry, we do a lot of warm, like garam pani, hot water bottle, heat pad. We don't do icing. I have noticed myself, and I always tell, and I have seen a difference. Whenever you have aches and pains, you have to understand that aches and pains are because of inflammation. Inflammation means swelling. तो जब स्वेलिंग होएगी किसी भी पार्ट में, तो वो बाकी की नर्व्स पे प्रेस आएगी, या वो कहीं ना कहीं हर्ट करती रहेगी. अगर आप उस पे सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए एक आइस पैक लगा देते हो, और फिर 10 मिनट के बाद दोबारा 5-7 मिनट फिर से एक आइस पैक लगा लेते हो, और फिर 10 मिनट के बाद दोबारा आइस पैक लगाते हो, तो उससे क्या होगा? यू विल नोटिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम swelling will reduce. Once the swelling reduce, your pain will become manageable. So next time, try it. Don't shy away from applying ice or ice packs, because they are not bad. As back home we say कि ठंडा लगाने से ठंड है, बाहर कंट्री में इतनी ठंड है, ऊपर से और आइस लगानी है तो जॉइंट्स में इश्यूज आएंगी. हम लोग हीटेड एनवायरनमेंट में अंदर रहते हैं, बट जब स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होती है, you try to apply ice so that the inflammation and the swelling go down, and then your pain will be more manageable and better. So next time, another thing is, try this out. Warm bath is when, like another thing, when you have your lower body pains. Epsom salt baths, they say. Put Epsom salt in the tub and put warm water and soak yourself or soak your feet. This is basically again to relax yourself. When your body or your legs are too tired, or you feel the crampy feeling, these are very good then. Ice is very good for inflammation and swelling. So there are two different aspects to the ice and the warm bath. So I'm just trying to give you the difference. Simple stretches. Trust me, sometimes when you have pains, I say when it's a very simple kind of a pain, don't let go of your exercise. Don't. Even if you're like doing a simple stretch like this and like this and like this, go slow, but continue, because movement is the key. I keep saying body needs movement. In between, I'm going through my menopause. I've been having a few issues, and I'm a person who is very regular with exercise. Piche maine ek hafta exercise nahi ki, so it felt as if I had no life in me. I made a mistake where I said, okay, body is not up to it, so I'm not even doing any stretches. But continue with your stretches. Simple stretches is going to keep your body in the movement, your cells in the brain movement. So continuing doing that. But if your pain continues for over 3 days after all these things, after your painkillers, after your resting, after your ice, after your umbar, that is a time when you say, you know what, I need to go to the doctor. Then we don't need to think of medicating ourselves or ignoring it or avoiding going to the doctor. Please take it seriously. I don't mean seriously in the sense get something big, but take it seriously and go for a consult and treatment. Okay, yoga and its benefits for legs and knees. So yoga keeps mental and physical health intact. As yoga is a low impact, it minimizes the stress on joint. Like we are talking for legs, knees, so these are joints. So once again, I did talk about mind, body, and soul. So when I talk about mind, it is about my mental health. The reason yoga is so important for mental health is because it makes you more mindful. बाकी exercises में मैं ये बात पहले भी शायद एक बार कह चुकी हूँ. I have seen people going to the gym. They will plug in their earplugs, or the TV is going to be on.
They are on the treadmill and they are in a world of their own, listening to podcasts and things like that. When you are spending time with your body, you need to listen to your body. You need to connect with your body. You don't need the whole 24 hours we have time to connect with the world. We are connecting with the world, but उसमें भी podcast सुनना है, उसमें भी आपने टीवी देखना है, उसमें कोई रेसिपी देखनी है. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये सोचिए कि दैट इज योर ओनली टाइम टू कनेक्ट विद योर बॉडी. अब आप कहोगे मैं सोने में कनेक्ट होती हूँ, तो आप सोने में कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप सो रहे हो. So connection to your mind body is when you are doing any regime, more so because yoga mein it's more about your breath control also. You are inhaling, exhaling, you are taking your own time on that. So that is when you're becoming more mindful. And when, if you, and this is a promise, if you are mindfully doing yoga, trust me, if you're mindfully watching your breath on your yoga regime, no thoughts will bother you. Otherwise, our mind is a monkey mind. It will keep on bringing 1,000 thoughts every second. Even if you're doing yoga, I am doing yoga here, but my mind is somewhere else. So when are we connecting? So when you're doing yoga, you are connecting. When you're breathing in, see to it that your full attention is only on your breath in. When you're breathing out, it is only on breath out. When you're in a posture, hold and only do and watch yourself breathe. So that is why I mentioned very clearly on this that it keeps your mental health intact. Because the first point I wrote is self-awareness. You're going to बार-बार जो आपका दिमाग 10 जगह पे घूमता है ना, वो आपकी breath में रहना चाहिए. ब्रेथ में रहेगा तो दिमाग नहीं घूमेगा, आप कनेक्ट होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, और वो पॉजिटिविटी हमको रोज आगे इस जिस वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा है, वी हैव टू हैव अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड. आज इतना डिप्रेशन क्यों है? आज मेंटल हेल्थ पे इतना गवर्नमेंट पैसा क्यों खर्च रही है? इतने साल पहले तो नहीं था ये. इतना टीवी है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सोशल मीडिया है, इसीलिए चीजों की अच्छाइयां हैं, but we have forgotten to keep a balance. So go back to and why yoga? Because this इतनी primitive, इतनी पुरानी ancestors की हमारे बनी हुई जो है, आज today the West is so fond of yoga. They have embraced yoga. I'm sure there's something in it. It's not just marketing. I'm sure they are finding benefits. That's why they are driven towards yoga. Biggest is the mental peace, mental health. It gives us a strength to face our challenges. Every body is having aches and pains. Every human being is having challenges. Trust me. You think I am sitting here happy and talking. No, I'm sure I have my own set of challenges. I'm sure you all have your own set of challenges. But if our mind is strong, if our willpower is strong, if we are more positive, we are able to respond to situations. We stop reacting to situations. So we need to be where we respond rather than react. वो fight and flight mode कहते हैं ना, हर time fight mode पे नहीं है, flight mode पे नहीं होना चाहिए. We should be in the rest and relax mode. So try make it a point. जब आप शुरू करते हैं योगा, tune out. सिर्फ ध्यान देना है मेरी ब्रीदिंग पे, कब मैं इनहेल कर रही हूँ, कब एंड उस अवेयरनेस और माइंडफुलनेस में रहना. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, नीज एक्स पेन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टिफनेस नहीं है. एज के साथ ठंड में रहते हैं, इतने माइनस टेम्परेचर्स में रहते हैं, घर गर्म है, लेकिन बाहर जब स्टेप आउट करते हैं, अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो एक्स एंड पेन्स विल बिकम मोर एंड मोर. So keep the body warm, lubricated and strong and flexible. With yoga, flexibility comes with all your stretches and strength comes when you hold your poses. So hold them for 5 seconds, 10 seconds, start increasing the interval of holding your poses. कोई भी पोज कर रहे हैं, सिंपल पोज ऐसा भी कर रहे हैं, तो आज सिर्फ एक के बाद दर्द होके रख दोगे, कल 1, 2, 3, 4, 5 seconds के लिए होल्ड करो. धीरे धीरे try to hold your poses for little more longer so that you can build up your strength. That's important. Balance. Again, this is unargumentable. Yoga helps
so much, because as we age, you will see we have a lot of falls, especially with seniors. Why? Because we lose a balance with the coordination of the nervous and the muscular system loses out. So when you lose out, sometimes you will just fall not realizing. So that is where the balance, when you do the balancing asanas, hold a chair, do your balancing asanas. It's not when I say balancing asanas, or leave everything and start balancing and then fall. No. Hold the chair with one hand and do the exercise with the other. Balance from one side, then hold it from the other and balance the other side of the part of the body. But balancing asanas and exercises are very, very important. And they are not difficult, trust me. Just get into a routine. Of course, you remember I did speak about warm up. So slow movement warms up the muscles. So when you start with slow movements. Don't go rapid, don't go fast. Go with the flow, take it easy, but build your strength. And you will notice when you started doing yoga, जब आपने योगा स्टार्ट की होगी ना, जैसे शांता जी ने कहा कि 4 साल में she feels she's somewhere, ऐसे जब आप योगा शुरू करोगे ना, आपकी एक होएगी, पेन होएगी, स्टिफनेस होएगी, आप कहोगे नहीं मेरे से नहीं होता. आप अगर उसको हफ्ता भर करोगे, आपको 8th डे पे लगेगा कि जहां आप पहले पलाटी मार के नहीं बैठ सकते थे, आप कम से कम आज ऐसे कर सकते हो. अगर ऐसे नहीं भी कर सकते, आप यहां तक पहुंच गए हो. So continue doing it, but keep warming your muscles before you start. ये मेरा insistence है. Warm up and then do it. You will not have aches and pains if you are warming up. Emotional calmness and clarity with breathing. Yes, like I said, breathing mein when you're emotionally, you're only in tune with your breath. Why do we say meditation? Like people say, oh, I sit for hours. And I always say, well, I cannot even sit for 10 minutes because my mind is so full of things. So when you are sitting and meditating, or even those 5 or 2 minutes, if you are thoughtless, that's meditation. Don't put goals for yourself which are unachievable. Because if you will put unachievable goals, that will deter you and you will leave that regime faster than I and you think. आज अगर मैं कह लूं मैंने आज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, आपको मैं ट्रस्ट यू, आई एम टेलिंग यू, आप अगर रोज अपने आप को पुश करोगे घंटे के लिए, आप 2 दिन के बाद कहोगे मेरे से नहीं होता ये घंटा, और आप कभी नहीं करोगे. आपको मैंने सिर्फ आज 10 मिनट करनी, हफ्ता सिर्फ 10 मिनट करो. धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करनी शुरू करेगी, आपको उसके फायदे दिखने शुरू होंगे, आप 10 से 20 पे जाओगे, 20 से 40 पे जाओगे. बट उसके लिए गिव योर बॉडी दैट टाइम. You need to do it and get that clarity that I am doing it with it's doing it for myself, for my body. Because आज body है, ये body है तो हम सब है ना, हम भूल जाते हैं actually. The minute we are gone, this body is no more there. We are all having the same soul inside us. It's just that we are all wearing different costumes. So my name is Anjana, your name is Harsha ji, आपका नाम गीता जी है, आपका नाम शांता जी, आपका नाम जुब्दा जी है. लेकिन हमारे अंदर सोल एक ही है, सिर्फ अलग अलग कपड़े पहने हुए हम सब ने, नाम के कपड़े हैं. So कोशिश करके थोड़ा अपने अंदर जाइए. Like जब भी मैं कहती हूँ योगा is not about working outwards, it's working inwards. Sit down. जब आप योगा करें, वही तो टाइम है सिर्फ अपने gratitude, thankfulness. What is your purpose of life? Are you happy in what you're doing? Are you with your with your breath? These are the small things you need to start working on with yoga. Of course, it brings in mobility, like I said, the stretching and flexibility, physical fitness. And yes, now you will say, Anjana, is it possible? Yes, yoga reduces chronic pains. I've had patients with severe arthritis and they have kept on to a regime, and I have kept them onto it and they feel so much better. Their aches and pains are more manageable. They are not having painkillers much. They are not having anti-inflammatories much because they are managing it well with their chronic pains. And like I said, many more benefits. And of course, stiffness is again like it comes with the chronic pain. So you will until you do, I may say these things 100 times. But even you can pick up 2 things out of this, I'll be glad. You can even put 10 minutes a day, I'll be happy.
how and which yoga to practice. Of course, like I did mention, you have to approach it very mindfully to prevent injury. So you need to go slow, you need to get warm-ups. Just a few things I could remind you back again. Restorative yoga is a very gentle style. Restorative yoga is normally where you use bolsters, blankets. ये काफी gyms में होता है. I teach restorative yoga also, जहाँ पे कई लोगों जैसे bend नहीं करते ना, तो वो पीछे गद्दी जैसे लंबी गद्दी bolsters कहते हैं, वो हम पीठ पे रख के भी do. फिर जैसे कई हैं जो नीज नहीं आपने जोड़ के रख सकते, तो नीज के नीचे हम उनके पिलोज रखते हैं, टावल्स रखते हैं, ब्लॉक्स रखते हैं. सो अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल जनरल योगा नहीं कर सकते, look for restorative yoga. Yin yoga, I teach yin yoga also. People love it, and it's yin yoga is not for only seniors. People who want to just relax their body and their mind, they come to my yin yoga classes, because in this we do very asanas, but we hold them longer. We hold our stretches longer. We get that clarity of the mind, and we let the mind go with the relaxation of holding the poses. It is so calming and relaxing. I mean, it's a 1 hour class what I take, and it's amazing. And like I said, it's not only for seniors. No, it's for anybody and everybody. If you're very tired, go for a yin yoga class. Use blocks, because कई बार होता है कि like I said, we are times वो जब हम कई बार खड़े होने की एक्सरसाइज करते हैं और हाथ नीचे रखते हैं, तो पूरा हाथ हमारे फीट को नहीं टच होता. It's okay. Keep a block and then reach out to the top of the block. So that way you are not overstretching your muscles of your arms and your backs. So always keep in mind, if you're not able to do it, get these few things. Get a nice block for 2 blocks for doing these exercises. Then you have those bands, yoga bands. They are again very good to put around the legs and lift your leg up. Move your legs from one side to the other side when you're lying down or you're sitting. Yoga mat is 100% has to be a good. You should spend money on a good yoga mat for sure. There is no two ways about it again. Thick yoga mat. Bolsters and blankets, and of course chair yoga I do, so there's another option which I just mentioned. What about waist pain? Pain in the waist? Yeah, but then what is the reason? Is it a disc, or is it a pain in the bones, or it's a joint? What is the reason? It cannot be a consistent ongoing pain. No, it suddenly happened. I had pain in the stomach, and then I had pain in the backside. Yeah, because because there are 2 reasons. Maybe that pain actually went around that band of your waist. Mm-hmm. Because आपकी belly में pain है, number 1, it could be gas. Yes, it was gas. So there you go. So gas travels. So it went lateral. So pain. How it happened? It suddenly happened, and it was quite excruciating. It could be like there could be many reasons for gas depending on food what you ate, या आप ज़्यादा देर भूखे रहे, या आपने खाली पेट कैफीन पी. हर एक के reasons हो सकते हैं, but gas तभी मैं कहती हूँ कि पानी पीते रहते तो भी gas भी कम होती है. हाँ, वो तो रात को सारी रात पानी पिया, so it went away. But it was so bad that I was very nervous. Yes, so yeah, that's what I'm saying. We forget the simple things of life, like breathing well, drinking water. So these are some simple things, but you know what? As we start incorporating them, life is a better place. Yoga poses for good knees. Butterfly pose. If you want, you can all write it down. Bridge pose. Butterfly. ये मैं शायद एक दिन मैं उसमें से आधा घंटा लेके कुछ क्लास I will teach you these, so आप लोग लिख सकते हैं. I will remember, I know them, so you should, I can teach them there, because इसके लिए proper I need time. I cannot rush it up, because गलत होता है तो फिर it's going to be उसके benefit की बजाय नुकसान ज्यादा है, तो वो मैं नहीं करूंगी. तो these are a few poses. जैसे अब simple है, नीज के लिए अगर आप लेटे हैं बेड पे या जमीन पे लेटे नहीं है, बेड पे भी लेटे हैं, तो बिल्कुल बेड के पास जाके टांगे दीवार के ऊपर खड़ी लगा दो. Let the blood flow downwards. नॉर्मली ये रात को मैं आई ट्राई टू डू इट बिफोर आई स्लीप, बिकॉज इससे जो भी पूरे दिन का ब्लड फीट में होता है ना, इट गोज द अदर वे राउंड. इट हेल्प्स इन डाइजेशन, नंबर 1. Secondly, it helps in relaxing your feet, so you don't get cramps at night, so you're more relaxed to sleep. In the one, legs up the wall. So सिर्फ टांगे ऊपर नहीं है, जमीन पे आप अपना बेड पे लेटे हुए हैं और दीवार के साथ में टांगे पूरी ऊपर कर लीजिए. Then I have yoga poses to avoid for knees. Avoid poses that place the legs at uneven angles. For sure, अगर कोई भी pose में एक टांग बाहर है, एक टांग ऐसे अंदर करनी है, avoid करिए. Especially अब जैसे child's pose है, ये सबसे simple pose है.
ये रेस्टफुल पोज है, सबसे रेस्टफुल पोज है ये चाइल्ड्स पोज। लेकिन जैसे व्रज आसन के लिए मैंने मना किया, ऐसे ही चाइल्ड्स पोज के लिए मैं मना कर दूं, बिकॉज जैसे ही आपकी नीज इन्वर्टेड होंगी, अगर आपके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इट्स गोइंग टू कॉज फर्दर प्रॉब्लम। तो कहना बड़ा आसान है कि अरे सबसे सिंपल पोज तो है, सबसे रिलैक्सिंग पोज है अंजना, लेकिन अगर आपकी नीज में इश्यूज हैं, you have to avoid it. Avoid poses that involve bending of the knee to the side. Pigeon pose. This is a very good pose for the spine. It is an excellent pose to strengthen your spine. लेकिन आप मानेंगे मेरी left knee में थोड़ी issues हैं क्योंकि I've overused my knees for yoga, and now I've started feeling मैं जैसे pigeon pose करती हूँ, my left knee starts hurting. I've stopped doing this pose. Until I'm going to make my knees stronger, I'm not going to do this pose. So like I said, you will slow and steady, you will realize कि कोई pose में आपकी body मना करेगी, आपकी body जैसे मुझे indicate होता है कि मेरे left knee, right knee मेरी ठीक रहती है, but left knee तंग करती है. So I've stopped doing that pose. So very simple things. Listen to your body. Avoid poses that are difficult for you to maintain proper alignment. Yeah, like I said, balancing asanas. If you're not able to align your spine, if you're not able to do it, either don't do it. Otherwise, ask your yoga teacher a variation के किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि you need to do balancing asanas. But always do it so that you don't lose your balance. Because एक बार आप गिरेंगे, God forbid, you don't know what's going to come up. So it's better to be careful than to be sorry. Yoga poses which are good for the legs. Okay, now to build up the strength of the legs. I told you अगर knees में pain है तो आपने अपनी hamstring जो thighs हैं उनके मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उसका मसल जाके नी को पकड़ता है. तो अगर आपकी जो hamstrings हैं, अगर आपने उसका मसल स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो आपकी जॉइंट्स में कम पेन होगा. इसीलिए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग एक पोज है. when I'll teach this also. Very simple, but it works on the whole body. It stretches your spine, it stretches your legs, it stretches your arms, and it's extremely good for the whole body. इसमें कोई bends नहीं है, कुछ नहीं, except for a incline on your spine. Warrior pose 2. Triangle pose 2. These are just, I said, मैं इसलिए मैंने लिखे हैं कि कल आप इनको गूगल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये नाम दिए हैं. So आप लिख सकते हैं और कल चेक कर सकते हैं कि अंजना क्या बात कर रही थी, कि लेग्स के लिए कौन से अच्छे और नीज के लिए कौन से. I wanted to just educate. Chair pose. Wide legged forward bend. जैसे कहते हैं ना, दोनों टांगे खोल के, फिर अब ये फॉरवर्ड बेंड है. तो अगर आपकी स्पाइन में पेन होता है तो पहले स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करें सो दैट आप ये वाइड लेगेड फॉरवर्ड बेंड कर सकें. योगा पोजेस फॉर रेस्टलेस. ये मैंने बहुत सुना है मेरे सीनियर्स से कि मेरे को रेस्टलेस लेग्स, मतलब वो टांगों में ना क्रैम्प्स पड़ते हैं और वो अनईजीनेस फीलिंग आती है. सो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिया जरूर कि मैंने कहा ये डिस्कस कर ऑनलाइन फोटो प्रिंटिंग. सो इसमें सबसे पहले जो है लेग्स अप द वॉल, आप देखोगे ये दूसरी बार आ रहा है, जिसमें टांगे पूरी आपने दीवार पे ऐसे करते नहीं है. इससे लाइक आई सेड ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो इट ईजेस आउट योर लेग्स एंड द क्रैम्प्स इन द लेग्स. देन द हाफ फॉरवर्ड बेंड, देन द सीटेड फॉरवर्ड बेंड. Bridge pose, again आप लोग लिख सकते हैं, bridge pose is one of the best poses for building the strength of your spine. Child pose is again a very good stretch for your spine, but if you have bad knees, you don't do it. Shavasana is the most desirable for everybody. लेट जाओ, रिलैक्स करो, आंखें बंद करो और शरीर को रिलैक्स करो. So whenever you feel कि टांगे दर्द है, शरीर दर्द है, एक अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, कोई फ्लूट मेडिटेशन लगाइए, एंड जस्ट लाई डाउन, ओपन योर लेग्स, ओपन योर आर्म्स. शव आसन मीन्स द कॉर्प्स पोज, या हमारे में जैसे मरे हुए को कहते हैं शव, तो उसका मतलब शव आसन ये है. बट दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलैक्सिंग पोजेस. सो डोंट फील गिल्टी. 10 minutes, put a music and do it. I'll just sum it up now. I think I've taken a lot of your time. So like I said, yoga can be started at any age and stage of life. So don't hesitate. You have never done it, start now. Listen to your body, take baby steps. Listen and get the safe limits of your body. Every time it will tell you, yes, you can do this, you can't do this. The more you listen to your body, the more your body is going to talk to you. So start experiencing that also.
Yoga maintains a balanced metabolism. Like I said, it works on your gut because you're doing the asanas. वो different हमारे जो अरे यार we call them chakras. It works on those also. So it helps a good metabolism. Appreciate what you do and make progress. ये मैं बहुत जरूरी कहूंगी. हम रोज अपने आप को कहते हैं मैं इधर अच्छी नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता. Please, please, please. Every time, give a pat on your back and say, I am very good. I've done this today and tomorrow I'm going to be better. You all have to learn to do it. We don't do it. We never do it actually. So most importantly, start appreciating yourself and this beautiful body. Yoga heals your body. It relieves aches and pains. It relaxes you and you sleep better for sure. Stress reduces and you can have a healthier heart. Like I said, the minute you start meditating, the minute you are mindful when you're doing a yoga, the minute you're mindful when you're doing a pranayam, you will see. Okay. आप लोग अगर बीपी अपना मेजर करते हैं, सिंपल थिंग, आप बीपी लेने से 10 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग करिए. उसके बाद अपना वो जब आप लगाते हैं अपना जो बीपी मेजर करने वाला है और आप डीप ब्रेथ्स लीजिए and you measure your BP. You will find 10 to 12 numbers का फर्क. So deep breathing is so important. That's why I said stress सबकी life में है, but we have to just deal with it, go with each day and say, you know what, worst come to worst क्या, you will handle it tomorrow, but you need to be alive for that. So reduce your stress, have a healthy heart, eat well, sleep well, balance in your life, and life is beautiful. It gives you more energy and brighter moods. Yes, I said positivity, and yoga promotes self-care. Love yourself, respect your body, maintain a regular exercise regime. I am pushing it again and again. जैसे कन्वलजीत आंटी ने पूछा, मैंने कहा अगर आप 5 दिन खा रहे हो तो 5 दिन एक्सरसाइज करो, अगर 7 दिन खा रहे हो तो 7 दिन करो. So let's do that. Stay positive. गिव बैक टू योर कम्युनिटी. आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हम लोग सब अपने लिए बहुत बहुत जीते हैं, अपनी फिक्र करते हैं, आज मेरे को ये, आज मेरे को ये. थोड़ा सा टाइम जरा बाहर जाके वॉलंटियर किया करें, किसी की भी हेल्प कर सकते हो, जैसे भी अपना अपनी हेल्थ स्ट्रेंथ और अपने हिसाब से वॉट एवर यू कैन, बट यू विल फील वेरी गुड व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स इन एवरी स्मॉल वे. ईट हेल्दी, sleep well, connect with people whom you can grow mentally with. This again is so important. हम लोग टॉक्सिक लोगों के साथ बैठते हैं. मैं नहीं कहती कि कोई टॉक्सिक है कि नहीं, बट कई बार कोई बातें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं. Learn to move out of that conversation. Say it's okay. We all have our goods and bads. Let's not talk about it. So start nipping it when it is coming to a company. Look for a company where you're growing mentally. This, what Uzma has created, this group is amazing. These people are amazing. You all are amazing. So these are the people we want to grow with, and I want to grow old with all of you. So you need to let go of any negativity. You need to choose goodness. Like I said, don't have much expectations. And like I always say, smile is free. So smile often. Thank you so much for your time and energy. Now I'm ready to take any more questions if you have. Thank you so much. अंजना जी बहुत अच्छा, आपने माइंड क्लियर कर दिया. हमको अभी पता चल गया कैसे योगा करना है, क्या है, पानी कितना पीना है. Thank you so much. Thank you so much. It was really informative and reassuring, and for me particularly at personal level, I'm saying I feel I'm on the right track. And Yes, whatever the asanas you were saying, said, yeah, I can do that, I can try that, you know, that kind of thing. Our yoga teachers, they do 30 Surya Namaskars 3 times a week, early in the morning in 15 minutes. And they asked me, you come, do 2, that's fine. You don't have to do 30. Do 2 the right way, and there are people who do 30. Some people do. I tell them, I did 5 today. I did 8 today, and you know that makes me feel good that I can do it. Only thing is early morning, 6:30 to 6:45. They do it Monday, Wednesday, Friday. So and you feel fresh after that. The whole day is really good. First thing in the morning you start.
And You I like Shanta ji, you yourself feel so good, right? चाहे दो भी करती हो, you're so proud you can do it. absolutely, absolutely. We have to learn to be proud of what we are doing. Such as we have yoga 5 days a week. We do Monday to Friday, 10:30 to 11:30. If anybody is interested, I can send you the link. It's on Zoom. We are doing. We don't do. Okay, I'll put it in the. हाँ शाम group में डाल सब दीजिए. तैयार I है. would also love to if I can. Why not? सब And the तैयार है, लिंक भेज दो और टाइम बता दो. Yeah, the thing is, when the yoga teacher is not around, I take the class. I don't do yoga. I'm not trained yoga. I do exercises, simple exercises. Just to strengthen your muscles and things like that. Simple ones I do. Then I put some music on. I said, keep moving your body, whatever way you can. I keep merrily dancing. And they look at me and they do some of it, and then we do stretches to cool down, and they enjoy it because I'm like a substitute teacher. और सबसे अच्छा वॉकिंग एक्सरसाइज, वॉक तो हर रोज मुझे लगता है 1 घंटा करनी चाहिए ना. लेकिन वही होते ना हर्षा जी, ठंड इतनी है तो कई बार नहीं हो पाता यहाँ नहीं, पर. मैं तो घर में भी चलती हूँ. तो घर आप में walk अपना ये जो भी काम, जैसे उठना है हर थोड़ी देर के बाद उठना है, बैठना कम है तो स्टेप्स अपने आप हो गए, वॉक हो गई. और कोई सी के कोई डाउट्स है, आई विल बी हैप्पी टू. अंजना जी बहुत जबरदस्त सेशन है. बहुत और मजा आ गया. बहुत मजा आया. और मैं यकीन करें कि मुझे खुद पे भी शर्म आई कि मैं बहुत हड हराम हूँ और मैं बिल्कुल अपना इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं एक वक्त में मैंने एरोबिक्स भी किया, योगा भी किया, मैं सब कुछ करती थी जब बैक होम पे थी. तो अब इतनी, हालांकि डॉक्टर ने मुझे नी की एक्सरसाइज के वो पेपर दिए हैं कि आपने ये करनी है, लेकिन मैं बहुत लेजी हो गई हूँ इस मामले में कि बस वो कहती चलो कौन उठेगा कौन करेगा. बस ये सबसे बड़ा मेरे में फॉल्ट है कि जो मैं हिलती नहीं हूँ. फिर मैं अभी भी मेरे वो जो कहते हैं ना टांग में वो जो क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, वो मैं इस तरह ज्यादा देर नहीं ना बैठ सकती, इसलिए मैं कैम ऑफ करके थोड़ा सा उठती हूँ, चलती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ. तो ये होता है कि मुसलसल बैठने से मेरे जो नी है ना वो स्टक हो जाते हैं. फिर जब मुझे उठना होता है ना तो वो फिर मेरे लिए उठना मुश्किल होता है. लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं और अपनी. आप ठीक होगे और आप जो भी कर रहे हो थोड़ा सा और उसमें एफर्ट की जरूरत है जुब्दा जी. आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप से जब रेडी हो जाओगे ना तो देखना अपने आप करो. क्या है ये नी की अंजना जी आप बहुत अच्छे बोल रहे हो. मैंने गलती की लगता थी. है. One second, गीता जी 1 minute. Let Varinder ji talk. मैंने ये गलती की थी तो आई हैड टू गो फॉर नी सर्जरी. उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है. जिस दिन मैं नहीं करती मेरा घुटना स्टिफ हो जाता है. अभी सेकंड की भी प्लीज आप एक्सरसाइज करो, अभी ठीक हो जाएगा. क्योंकि मेरा तो क्या था, कोविड का टाइम था, सब घर में थे तो आई इग्नोर्ड माय हेल्थ. तो आप प्लीज करो क्योंकि इसके बाद भी आपको करनी पड़ेगी. अंजना तो जी आप कहाँ सिखाती हैं योगा? मैं सीनियर क्लब्स में सिखाती हूँ. मैं जूम पे, अब जैसे पिछले मतलब थोड़ा टाइम से माय डॉगी इज नॉट बीन वेल तो आई कांट गो आउट मच, बट अगर मेरे घर के आसपास जैसे आई गो टू ब्रैम्पटन या इंडस वगैरह जाती हूँ, सो आई टीच wherever I like get a call, but I teach in most of the senior homes and different non-profits now. Okay. I'll be more than happy if you want to have a class. If you have people, let me know. I'll be more than happy. Sure, on Zoom, I'm always ready. Yeah, I think I'll tell Uzma we do it, but yeah, today was a different session. Like it was more on talking and telling. But वो chair की योगा होती है आधे घंटे में, but then you know that is fast. Yeah. अंजना जी एक बात और बताइए, जब गुस्सा आया होता है तो फिर कहता है कि नहीं मैंने आज एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना है,
तो then how to control that situation? नहीं कोई बात नहीं, उस टाइम मत करें, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद बोलें कि आज खाना भी मत खाना, आज गुस्सा आया हुआ ना, आज खाना भी नहीं खाना। Generally होता है, अपने पे गुस्सा खानों को ना निकलता है, खाने का कुछ बड़ा नहीं शौक है, हम पंजाबियों को, हम सब देसी, हम सबको देसी को ना खाने का बड़ा शौक है, तो फिर खाना भी मत खाओ ना, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं की, गुस्सा आया हुआ ना, मत खाओ, खाना भी मत खाओ। बहुत लोगों को खाना नहीं खाना है तो ठीक है, लेकिन चाय नहीं पियो। Without chai they can't live. Like I चलो don't बस drink वही, tea. चलो जो सी भी चीज सबसे अच्छी है, पसंद है ना, वो फिर बंद कर दो। करोगे, अपने आप को खुद पनिश करोगे और अपने आप करोगे। और मैं लाइक आई से, चलो आज अगर नहीं दिल है, once in a while it's okay man, you know we are not saints and monks। मैं खुद चीटिंग करती हूँ जब मेरी हिम्मत नहीं होती, लाइक मैंने पीछे एक हफ्ता नहीं की, बट you have to learn to bounce back। बस Yeah, absolutely. एज ह्यूमंस हमारे में ये कैपेसिटी कि हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा अच्छा अंजना जी, मेरे बॉडी में ऐसे बम्प है फैट के, इसका क्या करें, हम क्या कर सकती हूँ इसका? एक्सरसाइज आपने रेगुलर करनी है, धीरे धीरे धीरे, 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन चीजें टोन अप होंगी। बॉडी टोन्ड नहीं है, इसलिए होता है ये बम्प ऐसे फैट के। हाँ तो ओवर द इयर्स सारा फैट जमा हो गया ना। मैं नहीं कहती कम खत्म हो जाएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट होगी, टोनिंग होगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं कह दूं कि जी कल रिवर्स हो जाएगी। ये बॉडी है, रिवर्स होने में भी कितना टाइम लगेगी नहीं पता, रिवर्स होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता, लेकिन एज ह्यूमंस वी कैन नॉट लूज होप एंड वी हैव टू वर्क, नॉट थिंकिंग कि इसका होना तो कुछ है नहीं, मैंने क्या करना है करके। नो, यू नीड टू वर्क ऑन इट, इवेंचुअली यू विल फील इट इज अमेजिंग। कंटिन्यू, लाइक आई सेड, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, चलना बहुत जरूरी है सारा टाइम। हम जो बैठ जाते हैं ना, प्रॉब्लम हमारे बैठने में। उठना है, चलना है, लाइक मैंने कहा ना, पानी दूर रखो, सब चीजें, वो बिस्किट भी खाना है ना, तो ये नहीं कि जब बैठ गए किसी जूम सेशन में 2 घंटे के लिए तो चिप्स भी साथ में रख लिया, पानी भी साथ में रख लिया, सब कुछ नहीं। उठो, जाओ, पानी भी लाओ, चिप्स भी लाओ, 2 बिस्किट भी खा के वापस आ जाओ। नहीं, मैं भी उठी थी, उठ के मैंने आइसक्रीम निकाली थी, वो मैंने फिर थोड़ी खाई, मैं लैपटॉप भी उठा के साथ ले गई थी इसको तो किचन में। कंट्रोल करना है, आइसक्रीम को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, मैं मेरा जो दिल करता है मैं खाती हूँ। खाने के बाद मीठा ना मिले तो मैं झांकती रहती हूँ, यार मैंने आज कुछ नहीं बनाया, चलो आज खजूर ही खा लो। नहीं चलो, खजूर तो हेल्दी चीज है ना, लेकिन जरा व्हाइट शुगर वगैरह वो सब छोड़नी पड़ेगी जुबदा जी। ये तो आइसक्रीम कभी कभी खाती हूँ, डेली नहीं खाती। ये खाती हूँ, ये सौंफ है और इलायची है, और के बाद खाती हूँ मैं। सौंफ बहुत अच्छी होती है। Yes, I also I agree। हर्षा जी आप बोल रही थी ना, ये मेरे यहाँ भी बहुत फैट है, that doesn't matter, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। I couldn't do this, ये पकड़ना पीछे, I couldn't do this। मुझे सिखाया गया है कि बीच में एक टॉवेल रखो, नैपकिन, एक पकड़ो, one end of the napkin and the other end of the napkin, and every day you practice। और वैसे करके मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बदल चुकी है because of that। So इसको कहते हैं भंगड़ा जैसे डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके भंगड़ा, जैसे ऐसे ऐसे भंगड़ा डालते हैं ना, तो पीछे कर लो ऐसे। मैं वही कह रही हूँ ना, जोन सी चीज अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, म्यूजिक लगाओ और मूवमेंट करो। कोई जो चीज आपको अच्छी लगती है, स्लो म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई मेडिटेशन म्यूजिक, जो हो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज आप दिल से करोगे आप उसको रोज करोगे, जो चीज आप दिल से नहीं करोगे आप उसको नहीं करोगे, क्योंकि आप एक दिन करोगे तो आप उसको दवाई समझ लोगे। ये समझो कि मेरे खाने, मेरी पसंद की चीज है, तो यू विल डू इट, राइट? वट एवर यू लाइक यू विल डू इट। एंड एक पता है, एक और भी चीज है, मैं हमेशा सोचती हूँ एक थोड़ी हैबिट बनाने की जरूरत है। शुरू में कई चीजों की हैबिट नहीं बनती, बट आप कमिटेड रहोगे, लाइक आई सेड, अगर हफ्ते में 5 दिन भी कर रहे हो, कमिटेडली कर रहे हो ना, तो आप 2 दिन के बाद वापस कहोगे भी मेरा दिन आ गया, मैंने अब करना है। Thank you so much, everybody. I'm loving all your comments. Thank you so much. I so appreciate everybody. Really, we appreciate it. You gave such a nice talk and really very helpful. And you boosted us. We got the boost to jump back. I was planning to leave by 5:30. I have things to do. I said, never mind.
थिंग्स रहेंगे बाद में करूंगी, क्या जल्दी है, but so interesting I stayed back and Thank you, listened to all. Shanta ji. We all learn from each other. We all inspire each Absolutely. other. That is how we Absolutely. all do. And I think वही मैंने कहा, ये community is very, very important, where we try to boost each other up in every good way. हाँ जी, मदन अंकल जी. Anjana ji, you did a wonderful job, I tell you, and I was listening all that time, and I'm saying that what are you doing? I'm trying to apply all those things in my life, and I do yoga. I think you know it, and I go and help other people too. That's the very best thing to do it. और बहुत सी चीजें आपकी वो कॉमन सेंस की हैं, कोई उसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है. हाँ जी, हम सबको पता है. सबको पता है. अब पानी की बात हो रही थी, लोग मैं देखता हूँ 2-2 बोतलें 2-2 किलो की साथ में लेके घूम रहे हैं. अरे भाई क्या हो गया तेरे को, 2 किलो की बोतल लेके घूम रहे हैं? पानी तो जहां जाऊं वहां मिल जाएगा, किसी घर जाएंगे वहां मिल जाएगा, अपने घर जाएंगे तब मिल जाएगा. हाँ, छोटी बोतल रख लो, कार में है, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं है तो करो. जैसे आपने कहा रात को सोने से पहले पानी, ये कॉमन सेंस है. पानी पियेंगे तो रात को उठना पड़ेगा. हाँ, तो ऐसी बात नहीं, हमारी बॉडी जो है सबको बताती है सभी को कि मेरे में क्या कमी आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल. वी शुड लर्न टू लिसन अवर बॉडी. उसके अलावा आपने जो किया बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया मैंने. जो एक्सरसाइज की बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि चाहे थोड़ी करो लेकिन कॉन्स्टेंटली करो और रोज करो. Yes, yes. And आदत पड़ जाती है. I think we all will like it and we love it also, I think. And I think this whole group, मदन जी, मैं देखती हूँ, everybody inspires and they want to do. ये नहीं कि नहीं है. Everybody is trying and wanting to do and is doing. जैसे कहते हैं ना, कोई हैबिट बना लो अपनी, तो आपको अगर नहीं करेंगे तो एकदम आप अरे मैंने आज कुछ किया नहीं, I'm missing something. Yes. तो फिर आपको उसको करना है. Totally. Thank you. God bless you जी. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Thank you. I think I'll leave now. Yes. Thank you, everybody. Nice to see all of you. Thank you. Okay. अब नेक्स्ट सेशन योगा का कब होगा अंजना जी? I don't know. उज़मा को पूछूंगी. वो भी she will let us know. She'll keep us posted. मुझे अब पक्का नहीं है कब है next. But I hope आप जो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, so please do continue doing that. Please keep looking after yourself and remain active, remain healthy. And of course, I'll connect back again with you all. Thank you so much. Thank you. Thank you.